Hi guys, welcome back to another video. We have one of our alumni, Abhishek Gupta. He's currently working as a software developer, and I would say before I go ahead, introduce him to you, the better यही है कि आप Abhishek introduces himself, कि what kind of experience that Abhishek is carrying, what kind of background that Abhishek is carrying, and what kind of work that he's doing, and what kind of transition that he has had. So, thoda sa Abhishek, if you can give us a brief, I think that would be great. Hello guys. So Abhishek here. So I have done my engineering in IT. So currently I'm working Mhm. in full stack developer. So I have 2 years of relevance experience as a software dev. So yeah, and उसके बाद मैंने प्लान किया था कि स्विच करने के लिए just to upgrade my skills a little bit. So I decided to join Skillians. So yeah, I started their curriculum and I have successfully got able to switch in a decent company with a decent hike. So yeah. Okay. Great. So, Abhi, what is your current scope of work, Abhishek? What exactly are you being involved with? Front end, back end में involved हैं? थोड़ा सा और what is the technology that you're currently involved with, Abhishek? So currently I'm looking at in for front end I'm using Angular here, and for back end here is Java Spring Boot. Okay. So yeah, previously I used to work on Node.js. So I would say it's more interesting to to switch for new technology. Hmm. So yeah, currently I'm working on a Spring Boot more specifically in backend here, Hmm. and sometimes on Angular for front end. Okay. So do they have their own project or like मतलब इनके पास project है or is there any kind of particular product Hmm. they are currently working on? Yeah, they have their own internal projects too, but majorly they have like clients Hmm. from outside of India. We develop supply chain management software for them. So Okay. yeah, their project is kind of like that. Basically, we provide the software solution for supply chain management. Oh, okay. Got it. Okay. तभी इसका नाम workflow है. Okay. Got it. Yeah, Got yeah, it. that's right. Great name. Great work. I think that was lovely, of your profile. So Abhishek, just wanted to check Mm. how was your experience? My question number two would be, the Skillians का experience कैसा Mm. रहा आपका? Overall, like if you talk about studies, if you talk about practice, if you talk about, your teachers, your mentors, and all that. A lot of the people, that Mm. might be approaching you, they would be asking the similar set of questions itself. So instead of Mm. answering all of them, I think let's answer in a audio video mode itself. ये better है. Yeah, sure. Okay, go ahead. You can go ahead now. Yeah, generally I would say the curriculum is like much more decent. I would say it's pretty useful. Mm-hmm. I would say even for a freshers or experienced one, it's great. It's designed in a in a manner such that like कोई फ्रेशर भी हो सकता है कोई एक्सपीरियंस है तो दोनों के लिए अच्छा है करिकुलम ऐसा है सो Mm-hmm. for suppose fresher like support they have like they used to guide how to make projects. So yeah, that's what I like about the curriculum. And Okay. for experienced guys, they have like short, you know, like Mm-hmm. a short tutorial also. They Mm-hmm. used to like personally tell like, yeah, this is how you can go. So Mm-hmm. yeah, I mean, and in fact, the main thing is that DSA was well structured. I would say DSA काफी better structure था, like proper lead code questions होते थे, like most picked up questions जो basically पूछे आते थे, तो वो practice कराए जाते थे. तो yeah, it was pretty good curriculum, I would say. Okay. That helped me a lot. Yeah. Who was your mentor at that particular point of time? Was it Kushagra? Yeah, mentor was question. Kushagra was your mentor. Okay. I Pretty guess so. much. The most amount of career transitions I think that you have had is, through his batch only. Great. Cool. So Yeah. approximately how much, like, if you can tell the people honestly कि Mhm. कि आपने एक्चुअल में कितने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू एक्चुअली सॉल्व ऑन लीड कोड, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से भाई मैंने तो 100 कर लिए, आई डिड 150, आई डिड 200 एंड Mhm. ऑल दैट, मैंने इतने कर Mhm. लिए, मेरी तो तैयारी है, पूरी तैयारी है, पीपल आर इन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस Mhm. दैट.
So हम्म, tell हम्म, let let the people know the reality कि भाई कितनी practice करनी पड़ती है. So how much of the questions did हम्म, you do also? हम्म। See, the thing is that it doesn't matter आप कितना क्वेश्चन कर रहे हो, Mm-hmm. आपको क्वालिटी क्वेश्चन करना पड़ेगा. लेट सपोज कि आप सिर्फ इजी क्वेश्चन ही कर रहे यार तो काइंड ऑफ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन के पीछे आप जो भी करने आ रहे हो. सो इवन इफ यू डू लाइक 250 क्वेश्चन और 200, मेक श्योर कि द क्वेश्चन का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. नॉट इट्स नॉट लाइक कि आप सेम एरे के क्वेश्चन रिपीट कर रहे यार. देयर शुड बी वेरिएशन, सो दैट मैटर्स. आई मीन हाँ, प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगा, नॉट जस्ट लिट कोड. लाइक कोई कोई प्लेटफॉर्म होते हैं जिन पे लाइक थोड़ी अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सर्च करो. एंड मोस्टली आई कहूँगा लीड कोड इज इनफ, बट यू कैन ऑल्सो लाइक चेक आउट जीएफजी इफ यू वांट, लाइक यू वांट टू लाइक सी द हाउ द अप्रोच वर्क्स फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो या अगर आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे भी रेफर कर सकते हो, बट या यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट. दैट्स ट्रू कि भाई 100 150 क्वेश्चन करने से नहीं होना है ना, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट भाई. खुद से सोल्यूशन थोड़ा निकालने को सोचो. So या दैट्स नाइट. on an average, मतलब आपको लगता है like for mastering any of the things or any of the things in the world, I would say, not just DSA, let's not just talk about DSA or any of the tech. So let's for mastering, what is the kind of कि यार मैं इस रेंज में अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कर लूँ, like for example array है, हाँ. strings हैं, queues हैं, मतलब जो भी आपके पास, तो how much of the questions would these be? Like for example, like according to me, I think it should be minimum 500 plus. But what is it? मतलब since you're या श्योर. I'm a business guy, but since you are the dev guy, श्योर so, श्योर. but according to you, that range, वो range क्या है, वो sweet range क्या है, जहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ यार, इसने इतना किया, इसको इतना तो आता होगा पक्का. श्योर. सो वन थिंग इज लाइक कि आपको ना जैसे रहेगा, मोस्टली जो वेरिएशन है आपको ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट डी से तो बहुत ही परफेक्ट करना पड़ेगा. हम्म. ठीक है. वन थिंग इज दैट विच इंक्लूड लाइक एरे स्ट्रिंग्स लिंक लिस्ट एंड ऑल. सो हम्म. एडवांस ही कहूंगा, थोड़ी ट्रीज के कंसेप्ट अच्छे से करने चाहिए एंड डीपी हो गए, एंड इट्स लाइक मोर देन इनफ. थोड़ा एडवांस डी तक तो हम्म. इतना ही कि, एंड आई वुड से कि लाइक क्वेश्चन आप जितना करोगे ना उतना कम है, मैं तो ये बोलूँगा. The ओके. more you practice, like more the हम्म. the more way you will get to approach a solution. तो जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा. इट्स लाइक दैट इवन आफ्टर लाइक 300 400 को 100 क्वेश्चन करने के बाद भी कुछ लोग नहीं बना पाते क्वेश्चन. सो हम्म. इट्स जस्ट अपॉन योर प्रैक्टिस. हम्म. लाइक इतना डिसेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे हो, एंड या जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इवन इफ इट्स लाइक मोर देन 300 400, लाइक उससे भी ज्यादा, तो एट द एंड वही है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे आपके ही कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होंगे. सो करेक्ट. दैट्स द थिंग. करेक्ट. करेक्ट. नंबर जितना ज्यादा कर सकते हो, दैट्स द थिंग. ठीक है. करेक्ट. करेक्ट. Yes. So, Abhishek, the third question, and I think the most important question जो लोग पूछते ही हैं, हमेशा ही पूछते हैं, कि placement scenarios क्या है, how are the placements, and मतलब considering your experiences, आप थोड़ा सा experience है, like you are not a fresher, you're already having 2+ years of experience already. So, what is your I would say कि आपको कैसा लगा ना, आपकी जर्नी क्या थी? आई वुड जस्ट वांटेड फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम यू. या सो लेट मी बी स्ट्रेट. सो प्लेसमेंट सिनेरियो का ऐसा है कि फर्स्ट यू हैव टू पास द क्राइटेरिया, लाइक जैसा है. इफ यू पास द क्राइटेरिया लाइक विद अ गुड स्कोर, डेफिनेटली देयर विल बी ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम अ टीम फॉर श्योर. अच्छा खासा सपोर्ट है. इफ अगर अच्छे स्कोर से पास आउट करते हो टेस्ट, देन प्लेसमेंट के लिए आपको अच्छा सपोर्ट तो फॉर श्योर रहने ही वाला है. देयर विल बी अ डेडिकेटेड support for you, like they will try to refer as much as for you possible. So like dedicated team होगी प्लेसमेंट के लिए, जो अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, एंड दैट्स द वैलिड रीजन कि दैट शोज कि आप हाँ कि लिटरली प्लेसमेंट के लिए आप कैपेबल हो. सो उन लोगों एक डेडिकेटेड टीम थी, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगा कि एक डेडिकेटेड टीम है आपके लिए, कि भाई वो कंटिन्यूसली आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी सर्च करते थे, एंड दे प्रोवाइड द हेल्प यू नीड. सो फॉर माई एक्सपीरियंस, लाइक मैंने तो 2 से 3 इंटरव्यू दिए थे. ठीक है. एंड आई गेस ये मेरा तीसरा इंटरव्यू था. सो या आई वुड से कि अच्छा खासा सपोर्ट मिला है केस ऑफ प्लेसमेंट. Okay, okay. तो ये है. Great. So, if we talk about in numbers, like let's not talk about numbers, I would say it's not professional. So, let's talk about percentage or multiplier. कि जैसे for example, if you were
job at X package, in company one at X package, mm, and now you're in company two mm. at 3x of package. So how much of the hike did you get? Like, was it 1x, 1.5x, 8x, 2x? How exactly would it be? Yeah. Yeah. So, like I would say, almost 1.3 times. I would say the packages Mm-hmm. like more than 110%. I would say hike out there. It's Mm-hmm. more than 110% hike. Okay, okay, okay. So, for the viewers, those who aren't able to understand, 110% hike, matlab, like for example, if you're at 10 LP, so the other person got 110% on it. That means he's currently sitting at 21, for example. So, Yeah. so that's 110% hike, not a 10% hike. The Mm. people. Yeah. Well, great, yeah. That's a good and a very decent hike. That's something that you got. It's Yeah. approximately 2.1x of the current salary that you got. Great, great, Yeah. amazing, 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 amazing. So, any other company like आगे future का क्या plan है? मतलब what is the company that you are targeting in future? Any of the big tech firms or क्या है? मतलब what are your Mm. years of goal? Yeah. So currently I'm just focusing on upgrading my skill, and Mhm. of course after that like maybe after like within few year like I would plan to switch for bigger opportunity. That's for sure. So Mhm. currently I'm increasing my skills like to achieve those kind of number. Wow. Say. So, guys, I think it's a huge, like for the people, those who are watching, I think that's a huge, huge, huge thing. Ki Abhishek, he has, settled in the company and it's been just been 15 months. Aapki date of joining was, no, sorry. I think it's been a month or month and a half that you've been into the company. Yeah. And Yeah. Abhishek has again, gone for upskilling and, he's still upskilling himself and, getting to know about the new technologies. Yeah. सो आई थिंक दैट्स अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जरूरी नहीं है कि एक बार अचीव कर लिया तो उसके बाद वहीं पे बैठ जाना नो एब्सोल्युटली नॉट सो वी हैव टू थ्राइव वी हैव टू मूव फॉरवर्ड वी हैव टू गो फॉरवर्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ओवर एंड ओवर वो करते रहना पड़ता है जब तक आप इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हो जाते कि हाँ दिस इज द पोजीशन दैट आई वुड Yeah. दिस इज द पैकेज दैट आई वुड वांट टू अचीव दिस इज द कंपनी दैट Yeah. आई वांट टू अचीव तो वहां पे जाके देयर इज द स्टॉप लाइक वहां पे फुल स्टॉप लगना चाहिए नॉट Mm. like in obviously you celebrate small victories but big wins के लिए Yeah. हमेशा ही रहनी चाहिए great यार अभिषेक Yeah. like I Sure. like the demeanor very much cool Mm. so last question for you Abhishek Mm. from my end is कि Mm. हम सबसे पूछते हैं कि यार हम हमारे एलुमनाई से कि since you're already 2 years work experience तो आपसे I would be having a much more advice mature advice coming in from your end कि what is the kind of things that freshers should be focusing on or 0 to 1 year Mm. experienced people or third year people or fourth year people should be much more focused out on उनको किन चीज पे फोकस करना चाहिए एंड क्या चीज है जो उनको स्टैंड आउट करवा सकती है इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड First thing is like focus on a skill. Like डिसाइड कर लो कोई पर्टिकुलर टेक स्टैक पे जिस पे आप काम करने वाले हो फोकस ऑन दैट स्किल जितना गेन कर सकते हो उतना बढ़िया है अगर सपोज आप थर्ड ईयर में तो कॉलेज खत्म होने के पहले आप जितना अच्छा स्किल गेन कर सकते हो लाइक सीख के लाइक एनीथिंग लाइक डीएसए पाइथन जावा और लाइक एनीथिंग सबसे हम्म पहले स्किल गेन कर लिया देन आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए इंटर्नशिप हम्म जनरली बोलूंगा भाई अगर इफ यू आर एबल टू गेट एन इंटर्नशिप हम्म दैट्स लाइक इट्स विल बी मोर इजी टू ओपन यू लाइक टू गेट इनटू कंपनीज like internship shows like yeah you had worked on a real projects so you have those kind of experience like industrial projects so हम्म if you can get an internship that would be like great so focus on that for the moment you're done with gaining skill focus on internship like if you can get so हम्म yeah these two things important skill पे focus करो भाई skill अपना जितना improve कर सकते हो that will help you to get an internship and internship will get you to will help you to get like crack other companies हम्म what you desire so yeah these two things I would say. So also, if you can tell the people कि not to just run after hyping internships, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को in the batch Mm. also, people are running behind कि यार सर इस internship में तो stipend नहीं मिल रहा मैं नहीं काम करूँगा. That is, I think Mhm. for the people like us, I think we have worked for absolutely free for the initial year. Yeah. और तो Mm. if you can guide them कि यार Mm. मतलब please go ahead and work Sure.
also because Hmm. मतलब जो आपके पास लर्निंग का कर्व होगा, Hmm. मच मोर ग्रेटर देन द Sure. money that you will be earning. Correct. So what is your Huh. take on this? Like, should they work for free or should they, Sure. running behind the No. like hyping stipends? The thing is that कि रियलिस्टिक होना चाहिए. यू शुड फोकस ऑन लर्निंग. लाइक आप 4 साल वैसे भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो हम्म यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन लर्निंग. सो हम्म इंटर्नशिप के लिए डोंट फोकस ऑन लाइक मनी. वंस यू गेट दोस काइंड ऑफ स्किल्स लाइक बाय वर्किंग देयर इवन फॉर फ्री, डोंट फोकस ऑन लाइक स्टाइपेंड वगैरह पे फोकस करके इतना मतलब नहीं. हम्म लाइक लर्निंग फेज आपका जो ये है ना, उस पर बहुत फोकस करो. द हम्म मोमेंट यू नो यू लर्न एंड गेन ऑल दो स्किल्स, देन लाइक ऑफकोर्स आपको अच्छा खासा पे मिलने ही वाला है. बट हम्म पहले लर्निंग पे फोकस करो. लाइक इंटर्नशिप भले फ्री हो या ये हो, कुछ भी हो, बट पहले अगर आपने वो स्किल्स गेन कर लिया वहां से, देन ऑफ कोर्स आपको भाई यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट. थिंग इज दैट कि भाई हम्म पेड हो अनपेड हो, अगर आपको मिल रहा है, द थिंग इज दैट कि वही बड़ी चीज है भाई. कर लो अच्छे से. ऑलरेडी यू नो इंटर्नशिप काइंड ऑफ ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है. अगर आप देखोगे इंटर्नशिप के लिए आपको वैसे भी बहुत डिफिकल्टी पड़ती है. सो इंटर्नशिप अगर आपको मिल रहा है, दैट्स लाइक more easy, you know, I would say, हम्म compared to like suppose if you don't have it, like good projects, even if आपने अगर इंटर्नशिप पे भी काम किया कहीं पे भी फॉर फ्री और लाइक एनीथिंग, तो हम्म वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है ना. सो हम्म उसको लर्निंग फेज की तरह देखो, मैं तो ये कहता Correct, 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 correct. So, हूँ. thank you so much, Abhishek, for joining us on, Friday evening. So, again, thank you for guiding the students, ki, what are the importance of upskilling, what are the importance of internship and all that. I think this might be very, very, very helpful for the people those are watching the stream itself, those are watching this particular video. I think that would be really helpful because, currently energy lacking nahi hai. It's, I think, there's a lot of lack in directions, that engineering colleges are not able to Course. give students. And I think that is absolutely important for the people to get the tech jobs and they have to get their expectations and all right. Yeah, Yeah. Cool. Cool. So thank you so much, Abhishek. You have a good day ahead and thank you for joining me. sure, it's been a pleasure. Thank you. Thank Best of luck to everyone. you. Thank you.